हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कम्युनिकेशन के ही टॉपिक पे। इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ समथिंग अबाउट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन डायग्राम और आई कैन से द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, and we saw about the verbal communication, one part of verbal, that is written communication. Today what we will see is oral communication, non-verbal communication, the characteristics of such, all the type of the characteristics of communication, intercultural communication and group communication. Okay, so basically अगर मैं characteristics की बात करूँ तो what are the characteristics of communication? See, द कम्युनिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा कि वाई डू वी कम्युनिकेट. Okay, we communicate so that to make the blueprint of the future actions, that means to develop the plans. Okay, blueprint means obviously कुछ लिख के उसको फॉर्म करके, to make the rough work of the future plans we have to communicate. To implement the plans, जो भी हमने प्लान्स बनाया उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा. टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत ही ज़रूरी है. टू फैसिलिटेट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दैट मीन्स हमको कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे रिकोगनाइज़ करना है. फॉर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट. टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, टू कोऑर्डिनेट, टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना कि कैसे काम करना है. ओके, for that we need communication. To motivate our employees, to increase the efficiency, to have the orientation, to organize the resources at workplace. For that we need to communicate. Good. So when we do this communication, there are some characteristics of communication, oral as well as written. Both the communication have some characteristics. So basically जब last time हमने written communication देखा उसकी characteristics क्या क्या होते हैं, I'll just revise in short. See, written communication, अगर हम लोग किसी को कुछ लिख रहे हैं, we have to make sure that it has to be in the easy language जो सामने वाले को समझ में आए. Okay, it has to have a structure. That means अगर हम लोग email लिख रहे हैं तो first of all we will greet and then we will write the main purpose and at the end we will give a thanks. Okay, so there should be a structure of writing. Then the direct speech, use the direct speech in the written communication. Now what is this direct speech? Okay, that means we have to use the passive sentences. Okay, indirect sentences नहीं यूज़ करने हैं कि say for example मेरे को बोलना है किसी को कि आप please come on time. Okay, please reach on time. So I will not write that you'll come on time, right? And then I'll give a question mark. This is not good. Here मेरे को respectfully उनको बोलना है that please come on time. I cannot use the indirect sentences. Very good. Apart from that, there should be less errors. जब मैं किसी को लिख रही हूँ, I should not make any grammatical errors. I should not make any vocabulary errors. I should not make any spelling errors. Okay, मेरा एटीट्यूड कैसे है लिखने वक्त. सी व्हेन आई राइट, मेक श्योर यू थिंक दैट व्हाट द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल like वो क्या समझ के वो पढ़ेगा. ओके, इन दैट एटीट्यूड यू हैव टू राइट योर written communication. And the last thing is your writing reflects you as a person and the organization. So आप अगर किसी के लिए लिख रहे हो, okay, so वहाँ पे एक लेटर हेड होता है. लेटर हेड मीन्स आप किसके थ्रू लिख रहे हो, मे बी यू और एन ऑर्गेनाइजेशन. So make sure your language, your attitude towards the writing and your structure of writing and your speech, everything should be proper. Now we will see what is oral communication. Okay, when the information or message is exchanged through words, okay, orally, that is called oral communication. ये तो बहुत simply understood है, right? Now in the oral communication what we have to understand is that the ideas are exchanged, the information is exchanged. यहाँ पे भी एक sender है, एक receiver है, information is exchanged. How it can be exchanged? Through face to face, one on one conversation, or telephone, or meetings, conferences, group discussions, conversations. With these things or the interview, the oral communication is possible. Okay, now here
what again we have to understand is how the oral communication should be. The speech, इज़ इट फॉर्मल टॉक और ऑडियंस इन अ प्लेस, हमें देखना है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं. ओके, सो इट इज़ फेस टू फेस, यू कैन हैव इंटरव्यू, टॉकिंग, ब्रीफ, मीटिंग्स, एक्सेट्रा. Now, what are the characteristics of oral communication? See, oral communication is a free plan. We don't plan. We don't plan that with whom we will be talking and when we will be talking. Sometimes we plan, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अचानक से बात करने लगते हैं. Okay, so we have to be very careful about that. There should be certainty. The subject matter should be certain to avoid the confusion. So अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ वहाँ पे confusion की कोई chances ना हो तो better है. ऐसे नहीं कि I want to say something and the person understand the third thing and he tells everybody the fourth thing. ऐसे नहीं होना चाहिए. My attitude, okay. See, in oral communication I have to have a nice टोन ऑफ वॉइस. मेरे बात करने का तरीका इतना स्मूथ होना चाहिए कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, द रिसीवर, शुड अटेन मी. ओके, ही शुड लिसन टू मी. देन कंसिडरेशन, I have to make sure that my language in oral communication is simple and understood. There should be neutrality. The receiver should be silent when the speaker is speaking. अगर एक इंसान बात कर रहा है तो आगे वाला इंसान चुप रहेगा. अगर आगे वाला बात कर रहा है तो जो सेंडर है वो चुप रहेगा. सी, अगर ऐसे अंडरस्टैंडिंग होगी, एक न्यूट्रलिटी होगी, then there will be a good communication. Oral communication be realistic. We have to be patient. It should be free from emotions. ऐसे नहीं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ तो बहुत इमोशनली दुख के साथ बात कर रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ तो मैं कमिटमेंट्स कर रही हूँ. It should not be like this. Okay, then what are the advantages? Obviously time saving. I'll give you an example. Okay, say for example, मुझे बताना है कि कल छुट्टी है, there is holiday tomorrow. I'll just say my staff there is holiday tomorrow if I have selected staff, let's say 10 people. लेकिन अगर मैं उन 10 लोगों को मेल लिखने बैठूंगी that tomorrow is holiday, I have to obviously write one mail and send to a lot of people. So oral communication, if we have to do some discussions or immediate actions or immediate discussions, for that oral communication is the perfect way of communication. It is cost saving. Okay, in oral communication मुझे पेन, पेंसिल्स, रबर, स्टेशनरीज ये चीज़ें नहीं चाहिए. अगर इफ़ अ पर्सन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वेरी गुड. इफ़ नॉट, आई कैन जस्ट यूज़ माई ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर दैट. It is more powerful. See, when I say that I have to talk to somebody, I know how to control the pitch of my voice. The speech is more powerful means to control here. Okay, easiness. ओरल कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इजी टू टॉक टू समबडी, राइट. अगर मेरे को उस इंसान की लैंग्वेज आती है, उस इंसान का कल्चर एंड एवरीथिंग पता है, आई कैन जस्ट टॉक टू दैट पर्सन. ओके, इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया, द पिच ऑफ माई वॉइस, द टोन ऑफ माई वॉइस, हाउ डू आई टॉक, ये सब कंसिडर करके आई कैन अट्रैक्ट अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. इट इज़ इफेक्टिव फॉर इलिटरेट पीपल, जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, हुआ इलिटरेट, विद द ओरल कम्युनिकेशन दे कैन अंडरस्टैंड. ओके, यू गेट क्विक फीडबैक. से फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से पूछना है कि प्लीज़ आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस डॉक्यूमेंट और हाउ टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, विल यू टेल मी. वो पर्सन मेरे को लाइक 5 मिनट में समझा देगा, मेरे को समझ में आ जाएगा. इंस्टेड अगर मैं रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ करती हूँ तो आई विल सेंड दैट डॉक्यूमेंट, द पर्सन विल रीड, he will write about it, he will send me, it will take a long time. So मेरे को किसी चीज़ का अगर क्विक फीडबैक चाहिए या क्विक रिप्लाई चाहिए तो ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट है. ओके, इट मेंटेन्स द सीक्रेसी. अगर मैं किसी को कमिटमेंट देती हूँ कि ये किसी को मत बताना, सो लिखा पढ़ा कहीं पे भी नहीं है. ओके, वी डोंट हैव एनी रिटन you can say proof for that, so it can maintain the secrecy. It is reliable, coordination, motivation. With oral communication I can have a good coordination, I can talk to people, I can have eye contact, or maybe not eye contact, but I can show the power of my voice. It avoidance of slow coach. Say for example कि फास्ट है, इट्स वेरी फास्ट, इट्स रैपिड. ओके, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आई हैव टू वेट फॉर द रिप्लाई. इफ़ अ पर्सन आई एम टॉकिंग टू, ही हैज़ टू से समथिंग और आंसर मी वेरी क्विकली. इट्स फ्लेक्सिबल, आई कैन डू इट एनी टाइम. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, आई कैन इवन यूज़ माई सेल फोन, आई कैन गो टू दैट पर्सन. सो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी. इज अ स्पेशल एप्लीकेशन. Okay, in why, how is a special application advantage for oral communication? See, in oral communication I can have good
attraction with the people. I can make sure that a person in front of me understands me and he gives me immediate feedback. The situations are more suitable, I get the immediate feedback. Flexibility है. Or even in oral communication it is informal. I can even talk to somebody. हर बार फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है. हाई, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग फाइन. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, इट कैन बी समटाइम्स इनफॉर्मल ऑल्सो. हाई, आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, डैश डैश डैश, फिनिश. ओके, सो इन ओरल कम्युनिकेशन दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to the way in which being conveyed information through emotions. I'm laughing, I'm surprised, I'm scared, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. So maybe if I don't say, my emotions will say that. Okay, what I need, my emotions can say that. My attitude, my language of not my body language, I can say. The clothes I am wearing, all this together is non-verbal communication. And a person don't say anything, but still the second person in front of that person understands his or her mood. Okay, so basically in oral communication we use the gestures and the facial expressions. Okay, so कौन से gestures? Nodding the hand, shaking, nodding the head, that means मैं हाँ हाँ ऐसे अपने nod करके head हाँ हाँ बोल रही हूँ. Okay, then my facial expressions. If I smile, that means I'm happy. Okay, if I frown, that means I disagree. If I make a eye contact, that means I'm honest. If I am unable to make the eye contact, maybe I lack the confidence. Okay, so oral communication can be through gestures or through the facial expressions. Good. Apart from that, okay, what in oral communication we have to understand that it has proximity. See, if I go to somebody's office and their office has sofa, a good a good office table, luxurious chairs, sofa, and then lot of water and food facilities in the office itself. Okay, I'll understand that उस person की position बहुत अच्छी है. Nobody will tell me. Okay, or say for example if I go in a classroom and I see a chair, okay, एक साइड पे और दूसरे साइड पे बहुत सारी चेयर्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस चेयर पे टीचर बैठती होगी, इस चेयर पे स्टूडेंट्स बैठते होंगे, ये ब्लैक बोर्ड है. Nobody tells me. Okay, so this is what is called non-verbal communication. Orientation, by this we mean the direction in which the body is facing. If you face the person who is speaking to you, you give the impression that you are listening to him. ओके, ओरिएंटेशन मीन्स यहाँ पे हमने क्या समझना है डैट अगर मैं उस पर्सन को समझ रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो और अगर समझ रहे हो, मे बी आई एम नॉट सीइंग यू, लेकिन आप और ऐसे नॉड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन. देन योर पोस्चर अगेन कम्स इन द ओरल कम्युनिकेशन. द मूवमेंट ड्यूरिंग द स्पीच. ओके, सी व्हेन आई एम हाउ द मूवमेंट ड्यूरिंग द स्पीच, ये हमने अगेन समझने की ज़रूरत है. Say for example, okay, when you are talking to yourself, try to remain still. So कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अपने आप से बात करती हूँ और अचानक से स्माइल करने लगती हूँ. Okay, so this is my posture. भी मैं कहीं पे बैठी हूँ और स्माइल, तो anybody who is in front of me will understand कि शायद मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी. That is called posture. Okay, your movements during the speech, your punctuality. आप अगर हर रोज़ टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, तो मे बी अगर एक पर्सन 5-6 दिन या 1 महीना देख रहा है, he will know you are a punctual person. That is non-verbal communication. आप उसको नहीं बोलोगे कि आप punctual हो, but with your actions that person will understand. Okay, so what are the advantages of non-verbal communication? See, non-verbal communication के advantages क्या हैं? Clear explanation. In non-verbal communication nobody tells you anything but you understand by yourself. Knowledge transfer to deaf or dumb person. अगर कोई person सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तभी भी वो देख के सब समझ जाता है. It is an exchange of feelings. Here we can also see aid to verbal communication. मतलब अगर कोई verbal communication से बोल रहा है that yes everything is going on fine, ऐसे समझो एक presentation में बोलना है, लेकिन उसका क्या बोल सकते हैं कि उसका फेस ऐसे दिखा रहा है दैट पर्सन इज़ नॉट इवन एक्साइटेड. वो एक्साइटमेंट की बातें तो कर रहा है बट द पर्सन इज़ नॉट इवन एक्साइटेड. सो दिस बिकम्स, मतलब हमको एक इंसान का एक्चुअली क्या चल रहा है वो समझ में आ जाता है. फॉर इलिटरेट पीपल,
अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट वो देख के समझ सकता है, राइट, कि आपकी सिचुएशन कैसी है. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ डिसएडवांटेज में क्या आएगा? इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव to give feedback. That means if I see the person and I know that person is very confident enough, मैं उसको बोल थोड़ी ना पाऊँगी ना, क्योंकि उस पर्सन ने मेरे से पूछा भी नहीं है, ये तो मैंने अपने आप समझ लिया. ओके, इन कंप्लीट कम्युनिकेशन, सी कम्युनिकेशन प्रोसेस में देयर इज़ अ सेंडर, देयर इज़ अ रिसीवर एंड देयर इज़ अ फीडबैक. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. लेकिन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग फीडबैक जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे हमें दे नहीं सकते. सो इट इज़ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन. और समटाइम्स इट इज़ इवन पॉसिबल दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे बोला जाता है. लेकिन किसी किसी की फर्स्ट इंप्रेशन भी तो गलत हो सकती है ना. वो पर्सन वैसे नहीं होगा बट वी थिंक दैट पर्सन इज़ लाइक दिस बिकॉज हमने उसे पहले ही वैसे अज्यूम कर दिया है. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ओके, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शायद कुछ गलत समझूंगी या फिर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी कैन अंडरस्टैंड मी रॉन्ग. इट्स पॉसिबल. एब्सेंस ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे हम लोग कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं देख के नहीं लिख सकते. यू नो, हमको फ्यूचर में अगर चाहिए होगा, ओह आपने ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे, वो लिखे हुए तो होंगे नहीं. तो देयर इज़ नो परमानेंट रिकॉर्ड. डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल क्लूज अक्रॉस कल्चर. इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो वही है कि इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है. देयर वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ नॉन वर्बल अक्रॉस दिस कल्चर. एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ. ओके, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई फॉरेन कंट्रीज़ देखी, वहाँ पे यू जस्ट सी समबडी, यू स्माइल एंड यू हैव अ पोस्चर ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. लेकिन हमारे कंट्री में ऐसे नहीं है. अगर हम लोग किसी को पहचानते नहीं है तो हम लोग उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकते हैं. करेक्ट. इफ़ आई नो somebody I will greet somebody, but in many cultures, in many countries, it is like even if you don't know somebody and a person is in front of you, you just greet that person. ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स है. ये नॉर्मली नॉन वर्बल नहीं, मैंने तो वर्बल का ही आपको एग्जांपल दिया. बट अक्रॉस कल्चर कोई चीज़ें डिफरेंट क्लूज़ दे सकती है. ओके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कोई कल्चर में ऐसे होगा कि अगर मैं आँख मारती हूँ तो वो बहुत नॉर्मल और फ्रेंडली है. लेकिन कोई कल्चर में ऐसे हो सकता है कि अगर मैं आँख मारती हूँ तो एज इन आई एम गिविंग सम इंट्यूशनल इम्पोर्टेंस, आई कैन से एक गलत तरीके की इंटेंशन टू अ पर्सन. ओके, सो वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है अक्रॉस द कल्चर्स. गुड. सो हियर व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने ऑब्वियसली इससे पहले भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो मोस्टली यहाँ पे भी ये वही चीज़ें हैं. सी, इट हैज़ टू हैव क्लियर मैसेज. कम्युनिकेशन में मैसेज क्लियर होना चाहिए. देयर शुड बी रिलायबिलिटी, कुछ इसमें रियलिस्टिक होना चाहिए. ऐसे ही नहीं हम लोग कुछ भी बातें किए जा रहे हैं. ओके, two-way channel, there has to be a sender, there has to be a receiver. Very good. Speed of transmission. Okay, ऐसे नहीं कि मैंने आज एक मेल भेजा तो वो मेल जाएगा 10 दिन के बाद, वो पर्सन ऑब्वियसली तभी जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद वो पर्सन पढ़ेगा जब तक वो टॉपिक वहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी. सो व्हेन यू आर सेइंग देयर हैज़ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, कितने टाइम में वैलिड है वो कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर मीडियम, मैं कौन सा मीडियम यूज़ कर रही हूँ, ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल. Good. Then there should be mutual understanding, open-mindedness and effective feedback. Okay, mutual understanding, जो मैं बोल रही हूँ वही सामने वाला समझ रहा है, जो सामने वाला बोल रहा है वही मैं समझ रही हूँ. This is very important. Okay, now here और एक चीज़ जो है ओपन माइंड. ओपन माइंड मतलब सी many times what we do is we presume the things. Okay, we assume that हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होगा. But if I just assume it that way, it is not effective communication. I have to be open mind. I have to listen to a person who is in front of me. Very good. Now what are the 7 C's of communication? There should be clarity, obviously. करेक्टनेस मतलब वो सही होना चाहिए. कॉन्शियसनेस मतलब उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए. देयर शुड बी कर्टसी. ऐसे नहीं मैं गुस्से में बात कर रही हूँ या फिर यू नो कि मैं खुश हूँ तो मैं बहुत खुशी से बात कर रही हूँ. एक कर्टसी, एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन में. थैंकफुलनेस मतलब ऐसे नहीं मैं थैंक यू बोलती जाऊँ, ऐसे नहीं. देयर शुड बी अ कर्टसी like the way I speak. Okay, I should have a type of empathy to a person in front of me. Concreteness, उसकी मजबूत जड़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन भी. कंसिडरेशन, दैट मीन्स ऐसे नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही सामने वाला समझे, जो सामने वाला बोले उसको भी मैं कंसिडर करूँ. एंड देयर शुड बी कंप्लीटनेस. ओके,
I say something, the person understand, the person gives me feedback, I understand. So एक complete process होना चाहिए, तभी ही वो communication हो सकती है. So these are the 7 C's of communication. Now हम लोग जो दूसरा भी देखने वाले हैं वो है intercultural communication. See, intercultural means 2 different cultures. Okay, it is possible that the communication between an Indian and African, the communication between an Indian and European, or the communication between a Rajasthani and let's say Punjabi. Okay, so different cultural groups की, different religions की, let's say a communication between a Muslim and a Hindu, a Muslim and a Christian and the Hindu. तो different religions की, societies की, ethnic groups की, educational background की. That means a communication between a peon and the marketing manager, a communication between a technician and the CEO of the company. So ये होती है intercultural communication. That means according to the different cultures हम लोग कैसे communicate करेंगे. See, this is a very very important point क्योंकि in intercultural nowadays the globe has become a small village. Okay, this whole world is a small village. So many times at workplace we meet different people from different culture, different background. So हमें उनको समझने की बहुत ज़रूरत है. Importance क्या है? It offers the ability to deal with the across culture because the globe has become a small place. It is possible that we meet different type of people. Okay, they eat differently, they sit differently, they talk differently. Apart from that, their wearing sense is different, but we have to make sure that we respect each and everything. हम लोगों को उनको judge नहीं करना है. It means having more and more contact with the people of different culture. Very good. What is the purpose of intercultural communication? क्यों पढ़ना है हमको? ताकि we understand the culture. See, culture plays a very important role in communication. The specific culture focus on identifying the communication behavior. एक culture का एक type of they have a different type of behaviors. Okay, see, it's possible that some people are reserved because the culture is reserved, they don't smile, but we have to work with that people. तो हमें उनको समझने की ज़रूरत है. Okay, so this is why we need to know the intercultural communication. Now when the communication happens between two people, that is interpersonal communication जो हमने previous chapter में पढ़ा है. Okay, so here अभी जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वो है ग्रुप कम्युनिकेशन. ओके, इन ग्रुप कम्युनिकेशन पहले होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो आप अपने साथ करते हो. इंटरपर्सनल 2. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तीसरा इंसान आपके साथ बात कर रहा है या आप तीसरे इंसान के साथ बात कर रहे हो और आप ऑलरेडी 2 इंसान हो, तो वो एक ग्रुप हो जाता है. ओके, सो ग्रुप कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, देयर कैन बी सब ग्रुप्स, देयर कैन बी कमिटीज, देयर कैन बी टीम्स, फ्रेंडशिप ग्रुप्स, एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन. इन ग्रुप कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन हो सकती है? देखो, अगर मैं एक ग्रुप में हूँ, आई कैन हैव वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दैट मीन्स आई कैन हैव जूम मीटिंग्स और थिंग्स लाइक दिस. आई कैन हैव इन पर्सन. से फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गिविंग यू द लेक्चर. ओके, अगर इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत है तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैम इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो आई कैन हैव 1-on-1 communication in group communication and I can have virtual communication. जैसे कि मैं किसी को सिर्फ देख के ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो उसे हम लोग, और लेट्स से इट्स अ ग्रुप, सो वी कैन हैव ग्रुप ऑनलाइन कम्युनिकेशन. सो बेसिकली आज हमने बहुत सारी पॉइंट्स कवर की है कम्युनिकेशन की. आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई वांट यू टू सपोर्ट माय चैनल.